विद द न्यू लेक्चर। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है द प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स का रीडिंग और ट्रांसलेशन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो पेज नंबर 116 पे है, चूज द नहीं, जो पेज नंबर 115 पे है, रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स में कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर 115 पे 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चन का जो जवाब है वो हमने देना है। द सेम पैटर्न, उसी पैटर्न पे मैं सवाल रीड करूंगा ओरली एंड द आंसर आई विल राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने पिछला लेक्चर गौर से सुना है और सुना होगा, देन द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी फॉर यू। ये आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है। सो अभी सवाल की तरफ आते हैं। पहला जो सवाल है, हाउ डज रीडिंग बुक्स प्रोवाइड प्लेजर टू द रीडर्स। रीडर्स को रीडिंग बुक यानी किताब के पढ़ना या किताब का मुताला करना रीडर्स यानी पढ़ने वाले के लिए कैसा प्लेजर प्रोवाइड यानी मसरत मुहैया करता है। ये स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पहले सवाल के जवाब की तरफ। Answer number 1. Answer number 1. Reading books give the highest kind of pleasure. Reading books give the highest Reading books give the highest kind of pleasure highest kind of pleasure. We read some books only for amusement and pleasure. We read some books only for amusement and pleasure We read some books only for amusement and pleasure when we are tired of studying. Next, full stop. When we are tired of studying serious books. We can read absorbing stories or novels to provide pleasure. We can read absorbing stories or novels to provide pleasure. ये स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, हाउ डज रीडिंग बुक्स प्रोवाइड प्लेजर टू द रीडर्स। रीडिंग बुक्स रीडर्स को कैसे प्लेजर प्रोवाइड करता है। सो द आंसर इज रीडिंग बुक्स गिव द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर। किताब का पढ़ना बहुत ज़्यादा प्लेजर देता है। वी रीड सम बुक्स ओनली फॉर अम्यूजमेंट एंड प्लेजर। हम कुछ किताबें महज अम्यूजमेंट यानी दिल बहलाने के लिए या प्लेजर यानी मुसरत के लिए पढ़ते हैं। व्हेन वी आर टायर्ड, जब हम थके हुए होते हैं, ऑफ स्टडिंग ज़्यादा मुताले से, ऑफ स्टडिंग सीरियस बुक्स के मुताले से थके होते हैं। वी कैन रीड एब्जॉर्बिंग स्टोरीज, हम निहायत दिलचस्प स्टोरीज और नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं। टू प्रोवाइड प्लेजर,
प्लेजर मुहैया करने के लिए। सो द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग पोइट्री? पोइट्री के पढ़ना के क्या अहमियत है, पढ़ने के क्या अहमियत है? राइट ऑन द आंसर। आंसर नंबर 2, reading poetry holds immense importance. Reading poetry holds immense importance. Immense importance. The best poetry gives us, comma, the best poetry gives us the noble thoughts and beautiful imagining cloth. The noble thoughts and imagining clothed in lovely clothed and imagining cloth in lovely and musical language Yes students, we have the answer of question number 2. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. How do books stay with us during the whole life? Answer number 3. Books stay with us during the whole life. The books stay with us during the whole life. The books stay with us during the whole life. In babyhood, we hear parents. In babyhood, we hear parents. We hear parents read us fairy tales. Read us fairy tales, comma, read us fairy tales. In our teen, we swallow exciting suspense novels. In our teen, we swallow exciting suspense novels page after page. Novels page after page. Novels page after page. And when we become adults, we still find, and when we become adults, we still find
gripping books that absorb us. Gripping books that absorb us. जी स्टूडेंट्स, वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3. सवाल नंबर 3 है कि हाउ डू बुक्स स्टे विद अस ड्यूरिंग द होल लाइफ. बुक्स कैसे पूरी जिंदगी हमारे साथ रहती हैं. द बुक्स स्टे विद अस ड्यूरिंग द होल लाइफ. बुक जो है वो तमाम जिंदगी हमारे साथ रहती है. इन बेबीहुड, बचपन में, वी हेयर पेरेंट्स रीड अस फेरी टेल्स. बचपन में हम पेरेंट्स यानी वालदेन हमें फेरी टेल्स यानी परियों की कहानियाँ सुनाते हैं. इन आवर टीन वी फॉलो एग्जिस्टिंग सस्पेंस नॉवेल्स पेज आफ्टर पेज. और लड़कपन में हम सफ़े के सफ़ा नॉवेल्स यानी एक्साइटिंग नॉवेल्स का सफ़ा बसफ़ा निगलते हैं. इतने ज़्यादा पढ़ते हैं कि वो हम निगलते हैं शौक़ से पढ़ने के लिए. When we become adults, जब हम जवान हो जाते हैं, we still find gripping books that absorb us. वही किताबें हम अबूर कर लेते हैं. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. How has the media affected the habit of reading books? Answer is answer number 4. More and more people prefer to watch TV. More and more people prefer to watch TV or surf on the internet on the internet full stop. Hence media affected the habit of reading books. Media affected the habit of reading books. The habit of reading books. Yes, students. Answer number 4. More and more people prefer to watch TV or surf on the internet. Hence, media affected the habit of reading books. Now we will come towards the question number 5. Books contain grains of wisdom. Explain it. इसका आंसर है आंसर नंबर 5. A book guides us in different ways. A book guides us in different ways. It is a friend and a teacher. It is a friend and a teacher. Books teach people to live. Books teach people to live. After reading some books, it is easy to understand. After reading
some books it is easy to understand. It is easy to understand what should be done and what must not be done. What should be done and what must not be done. Yes, students. Question number 5. Answer है a book guides us in different ways. It is a friend and a teacher. Book teach people to live. After reading some books, it is easy to understand what should be done and what must not be done. Now we will come towards the question number 6. सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं जिसमें कहते हैं Why does not a person feel lonely in the presence of book? किताब के होने से लोग और शख्स क्यों अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता? So answer is a person. Answer number 6. A person who reads books never feel lonely. A person who reads books never feel lonely because reading gives him pleasure and because reading gives him pleasure and inspiration. Inspiration. He always enjoys his free time. His free time. He always enjoys his free time and never get bored. And never get bored. Yes, students. The answer number 5. Now, answer number 6. A person who reads books never feel lonely. वो शख्स जो किताबें पढ़ता है अपने आप को कभी तन्हा महसूस नहीं करता because reading gives him pleasure and inspiration. क्योंकि किताबें उसको प्लेजर और इंस्पायरेशन या तसव्वुरात फराहम करता है. He always enjoys his free time. वह हमेशा अपने फुर्सत के लम्हात को enjoy करता है and never get bored और कभी बोरियत महसूस नहीं करता. Question number 7. How can we hear the voice and thoughts of authors who lived in different ages and countries? हम author और how can we hear the voice of authors? हम author के आवाज़ें और उसके तस्वुरात ख़यालात कैसे सुन सकते हैं जो मुख्तलिफ एजेस और मुल्कों में रहते हैं? The answer is book gives a unique chance. Answer number 7. Book gives a unique chance. A unique chance to link up with authors who lived in different with authors
who live authors with authors who lived in different ages and countries, who lived in different ages and countries. Through reading books, we hear their voice. Through reading books, we hear their voice. We hear their voices, thoughts and feelings, comma, thoughts and feelings. Yes, students. Answer number 7 is books or book gives a unique chance to link up with authors who lived in different ages and countries. Through reading books, we hear their voices, thoughts and feelings. Now we will come towards the question number 8. सवाल नंबर 8 की तरफ आते हैं. What is the importance of choosing the right kind of books? सही किताबों का इंतखाब का क्या अहमियत है? Answer is, write on the answer of question number 8. Answer number 8. The right kind of books give us sound moral advice. The right kind of books give us sound moral advice. Sound moral advice and teach us what is right and what is wrong. And teach us what is right and what is wrong. Yes, students, answer number 8. The right kind of books give us sound moral advice and teach us, जो हमें बताता है, सिखाता है कि क्या गलत और क्या सही है, what is right and what is wrong. Question number 9. What sort of books do you read in your free time? Dear student, this question is for you. ये आपके लिए है कि फ्री टाइम में आप कौन से किताबों के मुताला करते हो. So the answer I will write for you. I read novels and informative books. Novels and informative books in my free time. In my free time. नॉवेल्स पढ़ता हूँ और इंफॉर्मेटिव बुक्स पढ़ता हूँ फ्री टाइम में. हाउ कैन बुक्स बी आवर एवरलास्टिंग फ्रेंड्स? किताबें कैसे हमारा हमेशा रहने वाली दोस्त बन सकती है? आंसर नंबर 10. Books are our everlasting friends. Books are our everlasting
Books are our everlasting friends. They stay with us during the whole life. They stay with us during the whole life. You never feel lonely. Life full stop. You never feel lonely. You never feel lonely or bored when books are with you. Lonely or bored when books are you. Yes स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 10 जो है वो कहते हैं कि हाउ कैन बुक्स बी आवर एवरलास्टिंग फ्रेंड्स, किताबें कैसे हमारी एवरलास्टिंग हमेशा रहने वाली दोस्त बन सकती हैं। आंसर इज बुक्स आर आवर एवरलास्टिंग फ्रेंड्स, किताबें हमारे एवरलास्टिंग फ्रेंड्स हैं। दे स्टे विद अस, वो हमारे साथ रहती है ड्यूरिंग द होल लाइफ, जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। यू नेवर फील लोनली और बोर्ड, आप कभी भी अपने आप को लोनली यानी अकेला तन्हा नहीं समझ सकते हो, महसूस नहीं कर सकते, और बोर्ड और बोरियत महसूस नहीं कर सकते। व्हेन बुक्स आर विद यू, जब किताबें आपके पास होती हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स ये था आपके आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स। नाउ वी विल कम टूवर्ड द नेक्स्ट पोर्शन। अगले पोर्शन की तरफ आते हैं। पेज नंबर 116, पेज नंबर 116 जिस पे है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस में कुछ खाली जगह दिए गए, उसको मुकम्मल करने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उस 4 ऑप्शन को आपने उसमें से टिक मार्क लगाना है जो सही होगा। ठीक है, ताकि आपका सेंटेंस मुकम्मल हो जाए। हैप्पी इज द मैन हु एक्वायर्स द हैबिट ऑफ डैश व्हेन ही इज यंग। ए राइटिंग, बी स्पीकिंग, सी लिसनिंग, डी रीडिंग। द राइट आंसर इज डी रीडिंग। सो जुमला कैसे होगा? हैप्पी इज द मैन हु एक्वायर्स द हैबिट ऑफ रीडिंग व्हेन ही इज यंग। इट इज सेड रीडिंग इज टू द डैश व्हाट एक्सरसाइजेज इज टू द बॉडी। ए माइंड, बी हेड, सी बॉडी, डी हैंड। द राइट आंसर इज माइंड, ए। सो जुमला कैसा होगा? The sentence will be it is said reading is to the mind what exercise is to the body. Number 3, there are numerous books to please dash readers. A Sam, B different, C old, D young. So the sentence will be B is right. B पे आपने टिक मार्क लगाना है। There are numerous books to please different readers. Number 4, more and more people prefer to watch TV or dash on the internet instead of reading. A surf, B sit, C use, D look. The right answer is A surf. So the sentence will be more and more people prefer to watch TV or surf on the internet instead of reading. Number 5, reading is a nice means to relax after a hard day's work. What? Reading is a nice means to relax after a hard day's work. A stress, B de-stress, C sit, D sleep. So the right answer is B. Right answer is B, de-stress. अब आते हैं तीसरे पोर्शन की तरफ। Write T for true and F for false sentences. कुछ सेंटेंसेस दिए गए जिसमें सही गलत दोनों हैं। जो सही होगा उसमें आपने टी लिखना है यानी ट्रू, जो गलत होगा उसमें आपने फॉल्स लिखना है। नंबर 1, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स गिव अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजर। मुख्तलिफ किताबें हमें मुख्तलिफ प्लेजर यानी मुसरत देती हैं। सही या गलत? सो इट इज ट्रू, सही। The best poetry gives us the noble thoughts and beautiful imaginings. Cloth
in a depressed and musical language. It's wrong. False. There are a lot of people who are sure that products of modern technologies like radio can replace traditional books. False. Number 4. After reading some books, it is easy to understand what should be done and what must not be done. True. Sahi. Number 5. Books also gives a unique chance to link up with authors who lived countries ago. Book also gives a unique chance to link up with others who lived countries, sorry, not countries, I thought it's countries, अभी यही मैं कह रहा था कि ये false है, but it is not countries, it is centuries. Book also gives a unique chance to link up with authors who lived centuries ago. It is true, it is right. इस पे आपने यहाँ पे आपने true लगाना है, ठीक है? So dear students, आज का था ये हमारा lecture. Comprehension questions, 10 question, true false and correct the following sentences. ये हमारा आज का lecture था. I hope you understood and you enjoy the lecture. Thank you so much for watching me. See you with the next lecture. Take very good care of yourself. Allah Hafiz and Fi Amanullah.